Okay, in that. Okay, in that. All right then. So very warm welcome to everyone. Here we go. Oops. Network not working? It is. Okay. So hello, and a very warm welcome to everyone for yet another session. And we are seeing people joining quickly. So we'll give a couple of minutes as we do some gappe. We are coming here after a couple of weeks break. And hopefully you guys have been, let me straighten up my screen. Yeah. Hopefully you guys have been journaling. The whole stress, or rather not the stress, but the whole the whole push over here being on journaling. When we journal, and especially when we are starting to look at this path of journaling with no fingers aside, not even something on the story, we want to cut ourselves out of the story and simply focus on ourselves. And so, for the past many weeks, everybody knows that we've been staying with journaling and a couple of topics. If people are brand new over here, what we've done is there is assignment number one, or rather the journaling session number one, which is something for every day. You guys can go take a look and be with it every day. And then every week we are coming with words, concepts, and then focusing only on those concepts and how to look at all the energy behind those words, those concepts. So for instances, we've taken words like a marriage, we've taken words like struggle, and then looking at the energies underneath those kind of words, those concepts, those ideas, belief systems that we have, that we are holding. Each of us has a different belief system, different idea about this. And so being able to look at it wholly and to be able to see where all energies are holding us back and not bringing us to the place of मस्ती. तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा थोड़ा, विच इज कि अब हम इतने दिनों से जर्नलिंग कर रहे हैं, तो आज भी आप लोगों को जर्नल के साथ ही बैठना है। एक कागज पेंसिल पकड़िए और अपने कागज पेंसिल के साथ बैठिए, क्योंकि जो कुछ भी हम बात करेंगे उसके अंदर आपको और भीतर देखना है। यही हम कर रहे हैं पिछले 5-6 हफ्तों से। और जो लोग आज पहली बार आए हैं, वो पहला जो असाइनमेंट है जो हमने किया करीब 5 हफ्ते पहले, वो यूट्यूब पे मैंने अलग से एक लिस्ट भी बनाई है, जिसके अंदर जर्नलिंग के अलग से प्ले लिस्ट है, उसमें सारे असाइनमेंट्स हैं जर्नलिंग पे। तो असाइनमेंट नंबर वन, जो जर्नल सेशन नंबर वन है, उस पे जाएं, वो आप रोजाना कर सकते हैं। और उसके बाद कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे शब्दों पे हम ध्यान दे रहे हैं, और उन शब्दों पे ध्यान देते देते हमारे अंदर हमने उन शब्दों के बारे में क्या क्या ऊर्जा भर रखी है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और एज वी आर स्पीकिंग, जैसे हम बात ही कर रहे हैं, तो दर्शन ने वो लिस्ट पूरी की पूरी अभी तक जितनी भी है, वो लिस्ट जैसी तैयार हुई है, वो उसने दर्शन ने हमारे यहाँ पे रख भी दी है। इट्स ऑन द चैट, तो सब लोग उसको देख सकते हैं जो भी लाइव सेशन पे हैं। तो अदरवाइज वो यूट्यूब पे आपको आराम से मिल जाएगी। जब आप यूट्यूब पे MPFY फन पे जाएंगे, तो वहां पर ऊपर प्ले लिस्ट है, और प्ले लिस्ट के अंदर कई सारी हैं, वेबिनार विद मीनल, मेडिटेशन विद मीनल, और ये है लेट्स जर्नल विद मणि एंड मीनल, एकदम तुकबंदी करते हुए मणि जी तक कवि। All right, everyone. So here we are. Without any further ado, let's move into the session. So आज का सेशन जो है, हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जैसा कि हमेशा होता है। Let me begin the session by sharing the screen. Okay, so I share. Let's get there. Okay.
Everybody can hopefully see. Is everybody able to see the screen? It says Yes. my connection is unstable. So let me just once quickly go into the connection and see what. Can everybody hear me? If people are not able to hear me in the middle, please let me know so that then I will check for the connection. अभी तो ठीक ही लग रहा है, पर अगर किसी को आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिएगा. Okay, then let's begin. And today, अरे, what happened here? Okay. Today, the word is rejection. Rejection. So pay attention to the word rejection. Rejection, जब ठुकरा दिए जाते हैं हम, उसको रिजेक्शन कहते हैं. तो ध्यान दें इस बात पे. What are two or three instances that come to mind when you have been rejected by someone? What are the two or three instances that come to mind where you have been rejected by someone? ऐसे दो तीन जो कोई भी घटनाएं आपको याद आ रही हो जब आपको किसी से रिजेक्शन मिला हो, किसी ने आपको ठुकरा दिया हो, किसी ने आपको या आपके दिए हुए सुझाव को, आपके आइडिया को ठुकरा दिया हो. It doesn't have to be rejection of you. It could be rejection of a suggestion by you, simply where you have felt the rejection. So let us look at top two or three instances that come to mind. अपने आप से कुछ न कुछ एकदम से पॉप करेगा कि हाँ, ये वाला देखो, उस जगह पे उसने मेरे को एकदम ठुकरा दिया था. और अगर नहीं करे तो सृष्टि में अपना ये प्रश्न छोड़ दें कि ऐसी कौन सी जगह पे आज मुझको जाना है जहां पर मुझको देखना है मेरा ठुकराया हुआ सेल्फ, मेरा ठुकराया हुआ अस्तित्व. So, otherwise, if you are not receiving something, someplace, you can't remember when you were last rejected, simply ask in the energies as to what instances have come up today or are coming up today for looking into, to be able to look at your rejected self. Wherever your energy, wherever your thoughts take you, simply just pay attention to those instances of rejection. It doesn't have to be a big rejection if that is not what is coming through. It could just be anything that you would classify as rejection. तो लिखें उन दो तीन इंस्टेंसेस के बारे में, ध्यान लगाएं जरा और पता चलेगा आपको कि कौन से इंस्टेंसेस हैं जहां पे देखने को आ रहा है. ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो लिखनी नहीं है, so it'll just be a short couple of sentences, but simply bringing your focus, remembering those instances of rejection. Okay. And now, if you've written about two or three instances of where you have been rejected, now we go into two or three instances that might come to your mind where you rejected something or someone. You rejected something, you rejected someone, you rejected an idea maybe that somebody put up. So, two or three instances that come to mind when you rejected something and someone. कुछ ऐसी दो तीन जगहों पे ध्यान लगाएं जहां पे आपने किसी का सुझाव ठुकराया हो, किसी को ठुकराया हो, कोई आइडिया ठुकरा दिया हो. ऐसे दो तीन जगहों को याद करें आप जब आपने ऐसा किया. I love this picture of mine, which is almost like Mani is laughing and I'm feeling so rejected. So, two or three instances that come to mind where you rejected someone or something. अगर दो तीन इंस्टेंसेस से ज्यादा आते हैं तो लिख लीजिए. जब बाद में आप बैठेंगे और ये वाला सेशन खुद से करेंगे
तो उनको भी रिलीज कर दीजिएगा। जो याद आता है अभी उसको लिख लीजिए। If you can remember more than a couple of instances, then please just simply write them down because you can process this later. Today, we are simply just going to move through the process of how to look at this concept called rejection. Okay. Next one. Now we look at the emotions always. What emotions come to mind when you think of the rejections that you received? What emotions come to mind at two different places? So, one could be emotions when you are remembering that when you actually experienced the emotion, the rejection. And one might be what you felt maybe a little bit later. So, just giving you some examples of this. You might have felt hurt or sad at you or your idea being rejected. If you feel hurt when you are rejected, or your idea, sometimes it's not even the whole of you. You think you give a very good idea, and people around you reject that idea, don't like that idea, don't want to follow that idea. Yeah. And you feel hurt and sad. I've put the question why over there because it's very obvious. We've talked about the hurt and its connection with attachment. So, here too, why would you feel hurt? Because there would be attachment. Attachment to what? Attachment to the idea being mine. If it's just an idea that belongs and you just got it and it's not really yours to speak with, when it is rejected, would you feel that kind of hurt? No. But the minute you give an idea, your name, it came from me, this is my idea. And then when it gets rejected, because it is yours and because you are attached to everything that is yours. And so when that attachment comes to play, what will you experience? Hurt and sadness. So the attachment also, as you are looking at, the attachment can also be looked into. Lack. When you feel rejected in a relationship, you might feel lack. That, okay, this person doesn't want me, so I won't have love. I won't have a husband. I won't have a boyfriend, something of that sort. So you might experience some kind of lack, anger, frustration, rage, even disappointment. How could he or she do this? How could they even think of rejecting me? We hear news all the time of what some people go through extreme emotion of rage at being rejected. At being rejected. And you have so many instances that you hear about, sometimes acid being thrown. And what is that? That is simply acting from the anger. How could he? How could she reject me? And from that space, anger gets so much of fuel and fire that you are thrown into that emotion. Helplessness. What did I do to deserve this? Why are you rejecting me? I have always been so nice to you. Why would you do this to me? So, feeling helpless. Feeling of being unwanted, and with that, feeling of shame. And when you experience shame or this feeling of being unwanted, then you're coming from an inferior space and judging your own value. You must not be important, and that is why you are unwanted. You must not be required by anybody. You don't love, or rather, nobody loves you. And so you judge your self value in that space. And then maybe once you look back at that instance many years later, you might even experience relief. And so that would be maybe, what emotions come to mind maybe later, you might experience relief. तो क्या क्या भाव आते हैं जब आप उस के बारे में सोचते हैं जब आपको
रिजेक्ट किया गया, जब आपको ठुकराया गया या आपके किसी आइडिया को ठुकरा दिया गया, नहीं मानी आपकी बात और ठुकरा दिया, अगर तो आपको ठेस पहुंची, अगर आप तो भयंकर उदास हुए कि मेरा दिया हुआ आइडिया या मुझे ही क्यों ठुकरा दिया गया, तो समझ जाएं कि हर बार जब ठेस पहुंचती है तो वो क्यों, क्योंकि हमने बताया है कितनी ही बार कि ठेस का डायरेक्ट कनेक्शन है मोह से, मेरे से। जहां पे आप किसी भी चीज को मेरा, ये तो मेरा है नाम देंगे और फिर वहां पे उसको ठुकरा दिया जाएगा, तो जो मेरे आइडिया को ठुकराने में आपको चोट पहुंचेगी, वो आपको किसी भी ऐसे चलते हुए आइडिया में आपको इतनी ठेस नहीं पहुंचेगी जितनी कि अगर आपने उस आइडिया को अपना बना लिया और अपने साथ चिपका लिया। तो फिर जब कोई उसको नहीं मानेगा तो दर्द होगा, दुख होगा, अभाव, कि अरे इसने तो मेरे प्रेम को ही ठुकरा दिया, अब तो मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, अब तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तो, मेरा तो प्रेम ठुकरा दिया गया या मुझे ही ठुकरा दिया गया है। मेरे माँ बाप से मुझे प्रेम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मैं लड़की थी इसलिए ठुकरा दिया था, मैं बड़ी थी, मैं छोटी थी, कोई भी रीजन हो, लेकिन जब आपका रिजेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि उस जगह पे आपको अभाव महसूस हुआ हो। साथ में गुस्सा, भयंकर गुस्सा, ये भी हो सकता है कि आपको इतना ही भयंकर गुस्सा हो, आपकी नाराजगी अभी तक ना खत्म हुई हो कि किसी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने क्या किया था। और हो सकता है कि गुस्से के साथ साथ आप एकदम खुद को लाचार महसूस करें कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये मिला। तो लाचारी, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और लाइफ ने मुझे कितने ही बुरे तरीके से ये वाला इवेंट डील किया। शेम, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवांटेड, जब आप खुद को महसूस करें कि मुझे तो कोई नहीं चाहता, मेरी कदर किसी को नहीं है, तो आप खुद को इंफीरियर महसूस करेंगे और अपनी वैल्यू पे आप वहां पे जजमेंट करेंगे कि मेरा तो कोई मोल नहीं है, मेरा कोई मोल नहीं है, कोई मुझे चाहता नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे भाव आपके रिजेक्शन से हैं। और हो सकता है कि ये सब कुछ महसूस करने के बाद जब आप पीछे मुड़ के उसको देखें, जब आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, हो सकता है कि शायद आपको लेटर, बाद में कभी बहुत ही शांति महसूस हुई हो कि चलो अच्छा हुआ कि ऐसा हो गया, हम वहां से बच गए। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, तो या हो रहा हो कि आपको रिलीफ भी महसूस हो। क्या क्या इमोशन आपको महसूस हुए उनको देख लीजिए और टिक लगा लीजिए। मैंने सारी लिस्ट आपके सामने रख दी है। अगर इस लिस्ट के अलावा भी आपको कुछ महसूस हुआ है तो जरूर उसको लिखिए और साथ में शेयर भी कर लीजिए। What emotion comes to mind when you think of the rejections that you gave? What emotions come to mind when you think of all the rejections that you gave? Here are some examples. Judgments about differences. No, that person is different. I'm not like them. I'm much better. So I don't want them around me. So you might reject somebody's offer to be a friend. You might reject somebody's offer to be your love. And then from what space are you rejecting? Take a look. Are you feeling that they are not up to your mark, or did you feel that they are not up to your mark? Then these judgments about differences, you feel more superior, and so that is where you would reject somebody. Judgments on their value in your life, like, no, they don't add much value, no, I really can do without them, and I really don't need them around me. Okay, then you would reject. Then you would reject when you don't really find them valuable in your life. Dislike, you don't like somebody. Disgust, contempt, all of them coming from judgments itself. You might be very disgusted at the idea of being around something, and then you might reject the idea of that something. And sometimes you might even feel regret or guilt
or you might judge yourself as a bad human. I shouldn't have done this. I hurt them. I shouldn't have hurt them, or some such thing like that. And then again, later, at some point in time, you might feel the relief or the freedom of having rejected something and not having them around you anymore. You might feel the freedom. And so, simply, what emotions come to mind when you think of the rejections that you give? जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया, तो सोचें और देखें कि उस वक्त पे आपके क्या क्या भाव थे। क्या आपने उनको रिजेक्ट किया क्योंकि वो आपके लायक नहीं थे? आप उनसे ज्यादा खुद को सुपीरियर महसूस कर रहे थे? ये उल्टा है जो पहले था जब किसी और ने आपको रिजेक्ट किया। लेकिन अब आपने किसी को रिजेक्ट किया तो क्यों किया? हो सकता है कि आपको उनकी कोई कीमत ना लगे कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो पूरे टाइम यहीं पे आसपास ही रहते हैं, या ये आइडिया नहीं पसंद आ रहा, इसका कोई मोल नहीं है। तो हो सकता है कि उस जजमेंट में आपने किसी को रिजेक्ट किया हो, आपको नापसंद हो, आपको बहुत ही बुरे लगते हो, और आप उनको एकदम कंटेम्प्ट में देखते हो, मतलब कि बहुत ही नीची नजर से उनको देखते हो, तो भी तो आप किसी को भी रिजेक्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे आपके जजमेंट से आ रहे। लेकिन हो सकता है कई बार रिजेक्ट करने के बाद आपको ग्लानि महसूस हो, आपको बुरा लगे, आपको पश्चाताप हो कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने उनके साथ बुरा किया। फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मैंने उनके साथ बुरा किया इसलिए मुझे भगवान उसकी सजा दे रहा है। तो हम कई सारे इवेंट्स को यूं रिलेट कर देते हैं और उनको एक साथ जोड़ देते हैं। तो ग्लानी ग्लानी होती है, खुद को बुरा लगता है, खुद को पश्चाताप होता है अगर हमने किसी को ठेस पहुंचाई उनको ठुकरा के। तो या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ही रिलीफ महसूस हो कि अरे कितना ही बढ़िया हुआ कि मैंने वहां से अलग हो गई। अब आपको फ्रीडम महसूस हो, एकदम स्वतंत्रता महसूस हो खुद में और आसपास देखे कि कितना ही फ्री महसूस हो रहा है मुझको। परसेप्शन शिफ्ट। सो हो सकता है कि आप लोगों ने अभी लिख लिया हो अपने जितने भी आपके पास क्या कहते हैं उसको, जो भी आप एक या दो इंस्टेंसेस को लेके पकड़ के चलिए। हो सकता है कि और कई सारे इंस्टेंसेस आ रहे हों, बट राइट नाउ लेट्स एड्रेस द टॉप 2 or 3. So right now, even if you've thought of 4 or 5 instances, just simply look at the emotions. They will all be the same in most of the cases, but look at the emotions in 1 or 2 places and be able to see what you're feeling or what you felt and pay attention to those. Now, we are looking at the word rejection itself, and we are going to shift your perception through understanding. Yeah. So, this perception, so how bad you feel when you are rejected, and then all of these other emotions that you feel when you reject. But in this moment, now, forget the word rejection as that big word that it might be for a minute, but just let's see how many places you actually reject something every day without thought. Yeah, let me give you an idea. Through all the 5 senses, you are constantly rejecting. Smell. You choose between 3 different perfumes. Yeah. And you like one smell more and you reject the other 2. You like one smell more than anything else. I can relate to that. I definitely, my body is rejecting the smell that comes in this room when I sit many of the times, and the smell is of potty. So I'm definitely rejecting the smell of potty whenever that comes. So through the 5 senses, I'm constantly rejecting the smell. Sense on the skin. Something feels good and something doesn't. It might just be just a cloth, the feel of a cloth,
and you say, yeah, I reject polyester because I don't like the feel of polyester. Or it might be something a little bit bigger and you reject touch. You reject one particular kind of touch. You don't like that touch and you reject it. Could be a friend, could be a wannabe boyfriend, girlfriend, but you reject their touch. That doesn't happen every day, but surely the senses, when you are going out looking for clothes for yourself, you look for things that you accept and everything else you reject. Whatever you don't like on your skin, what do? You reject. Seeing whatever is pretty for you, you go all over the places. You will go to mountains, you will go to the seaside, just to be able to get a nature view of something that is so beautiful. And then when something is not beautiful, you reject. You don't run towards, I don't know, a heap of garbage just to see it. No, you reject that sight. Even when you're around there, you look away from that sight and you reject. You reject without thought. Hearing, so many so many parents will relate to this, that your children constantly reject whatever you are saying to them. So, even you, so many times when your spouse, when your brother, sister, parents, children say something, you reject. You do not listen to what they are saying. You reject with hearing whatever is being told to you, you reject. And taste. So many times, in so many ways, we make up our mind about what we like in this body. And then that we accept and we allow and we relish. And the other stuff we reject. Sometimes we decide through our mind that vegetarian is what we are. I've told on many of my webinars that, of course, as soon as we open our mouth, we are no longer vegetarian, because through the mouth, we are taking so many microorganisms and they're going directly and we are killing them all. So there is nothing called vegetarian, but so many times on the plate, we reject non-vegetarian food. We reject. All of these things we do so many times in a day without thinking. In making choices, even the choices of frequencies, can you see that you are rejecting one particular frequency? Just the minute you make the choice, even though you've accepted and allowed, and therefore sitting in it, but you're already working to going towards another frequency. So, what is it that you are doing really? You're rejecting. You are rejecting a frequency and choosing another one. Both of them are simply colors. So you're choosing red over yellow, yellow over green, purple over black. That's what you're doing. So when you do that to any color, that, oh, I love this color on me. What are you doing? You're rejecting many other colors. So you are rejecting. What does it mean? When you are rejecting something, what does it mean? You're simply experiencing the power and freedom to choose in the body. You have the freedom to choose and you experience and exercise that power. In Hindi, so let's look at this कि जहाँ पे हम कईयों को रिजेक्ट करते हैं और कई चीजों को रिजेक्ट करते हैं रोजाना बिना सोचे, तो जरा देखिए तो सही कि आप क्या क्या रिजेक्ट करते हैं बिना सोचे बिना समझे। अगर कहीं पे बदबू आ रही है तो आप वहां से हट जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। कोई परफ्यूम है, 4 परफ्यूम है, आपको उनमें से एक ही पसंद आएगा। आपने क्या किया? एक को पसंद किया और बाकी तीनों को रिजेक्ट कर दिया। आप कुछ देखते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, हो सकता है कि टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम ही हो और वो टेलीविजन पे प्रोग्राम चल रहा है और आपने कुछ और देखना है, तो आप इस प्रोग्राम को रिजेक्ट करोगे और दूसरे प्रोग्राम के चैनल पे चले जाओगे और वहां पे उस प्रोग्राम को देखने बैठ जाओगे। तो देखने में भी आपने पहले रिजेक्ट किया जो दिख रहा है और नया कुछ चुन लिया।
सुनने में कितनी ही बार जो कोई भी हमको कुछ भी कहता है हम नहीं सुनते उनकी बात। कोई अगर हमें ढंग की एडवाइस भी दे रहा है हम फिर भी नहीं सुनते। कोई कुछ कह रहा है नहीं सुनते, हम उस बात को ही रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें कही जा रही है। और कितनी ही बार तो दिन में हम कुछ चुनते हैं खाने के लिए और कई सारी चीजें रहने देते हैं। किसी बुफे में जाते हैं और वहां पे 25 व्यंजन हैं तो उसके अंदर से हम 5 ही खाते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है, बाकियों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। वी रिजेक्ट। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग विद रिजेक्शन ऑल द टाइम। पूरे टाइम तो हम फ्रीक्वेंसीज को चूज कर रहे हैं कि अरे मैं मीनल की मस्ती उठा लेती हूँ, उठा लेता हूं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मीनल की मस्ती को चुन रहे हैं। तो बाकी की सारी फ्रीक्वेंसीज को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। वही तो कर रहे हैं। और हो ही क्या यहाँ पे रहा है, दिन दिन रात हम उनको देख पा रहे हैं और देखने के बाद एक चॉइस बन जाती है। तो इसका मतलब ही क्या है कि जब भी हम कुछ चीज रिजेक्ट करते हैं तो हम कुछ भी और नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास जो फ्रीडम है कि मेरे पास ये पावर है, मैं खाने में 25 चीजों की बजाय 5 चीजों को चुन सकती हूँ। वो जो पावर मेरे पास है मैं उसको एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो रिजेक्शन में हमको क्या फील हो रहा है, सिर्फ खुद की पावर ही तो फील हो रही है। देखना शुरू करें आप इसको, इस नए वाले नजरिए को, कि जब हम किसी भी चीज को दिन रात रिजेक्ट करते हैं हम सोचते भी नहीं उसके बारे में। वी डोंट इवन थिंक of how many things we reject in a day. So many times, even ideas. I want to eat Chinese and you want to eat Indian, and one of us will reject the idea of rejection. This, this path we will not take today. We will not eat Chinese today. We will eat Indian. You rejected the idea. And then there is a power in this that you felt when you rejected the idea. Again, going back to the piece where if I hold Chinese very dear to me, if I put my focus on no, Chinese is all that I want to have, you never listen to me, you're always shooting down my ideas. Now it will hurt me when Chinese is not chosen by somebody else. Otherwise, it is just a thing on the menu and you choose so easily and you let go so easily. So, why is it that the word rejection actually hurts? It hurts because we have become attached to the outcome or we have become attached to the idea कि ये मेरा आइडिया है या ये मैं हूं जिसे तुमने रिजेक्ट किया है। Whereas when we are looking at it, we are rejecting so many things in a day. Everybody is doing that. Everybody is using rejection, the power of rejection, every single day. And that is how we want you to now be able to see rejection is just a very common word. रोजाना दिन में 25 बार होता है। वो जो 2 आपने इंस्टेंसेस लिखे हैं जब किसी ने मेरे को रिजेक्ट किया और मुझे कितना ही बुरा महसूस हुआ, उसको बैठ के देखें अब कि ये तो दिन में रोजाना कितनी ही बार होता है। Now let's come to the healing part of it. So now ask yourself, from all the rejections that you do in a day, all the rejections that you do in a day, are you really a good person or a bad person because you reject? Because you reject food, you're rejecting touch, you're rejecting sensory, you're rejecting frequencies. Are you really a good or a bad person just because you are rejecting something? Take a look. Now to touch the finger on the other, that person who rejected you, is the other really a good person or a bad person? Because they are exercising their choice to reject. Take a look at it, because we judge people. When we go through rejection, we
judge people. And so right now, simply being able to look at rejection as a daily thing, it happens all the time. And so letting go of those things that you're holding so close to you, वहां पे एनर्जी ऑफ हर्ट कितना टाइट से पकड़ रखी है, क्योंकि नहीं वहां पे मेरा रिजेक्शन हुआ, उस एनर्जी को थोड़ा सा हल्का करके, क्योंकि रिजेक्शन तो रोजाना यू एक्सपीरियंस. So, why all these emotions? We went through a whole list of emotions, sadness and hurt and judgments, and I'm not good enough, and I am not holding any value, and I'm going through shame. Then, why all of these emotions? Why are all of them here if rejection is such a daily thing? Because you forget. It is the frequency. It is just the frequency. And that rejection is simply for the experience of your emotions, your energy field in wholeness. You reject every day, you listen to rejections every day from people as well. But when that experience wants to be of hurt, then you will sit in the frequencies of sadness from a rejection. This is a common concept that happens every day, but you will pay attention to it when your experience demands that today you should sit in shame or in lack of self-love. Then you will term something as rejection. I got rejected, my idea got rejected, my belief system got rejected. And why is that you will hold rejection so dearly? Because it is the hurt that you wish to experience, that you will need to hold something dear. Remember, hurt is only from places where we have attachment. And so, when you wish to experience hurt, the experience can only be completed through rejection. So, now just very, very slowly read these lines. I am the vessel holding these emotions. मैं ही तो वो पात्र हूं जिसने ये इमोशंस भरे हुए हैं. I am the creator of these emotions. वो जितने भी इमोशंस हमने पहले पेज पे लिखे, वो हर्ट, वो एंगर, रेज, इतनी नाराजगी, I am the creator. मैंने तो बनाए हैं, मैं ही तो बना रहा हूं, दिन रात कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं. So this is my experience through the choices I make in the body. This rejection is my experience through the choices I make in the body and the choices others make in the body. This experience is complete with two people coming together, one handing out the rejection, one experiencing the rejection. Which side are you on today and what are you feeling is simply a play of your frequencies. The idea of not being chosen creates the experiences of emotions in me. The idea of having the freedom to choose also creates emotions in me. Can you see? One is from the side where you are being rejected, and the other is from the side where you are the one rejecting. However, both of them, both these sides create a set of emotions. I allow the emotion. It is just a frequency. It is just an emotion. It is also okay for me to experience this emotion again, because you cannot get away from the word rejection. You are exercising that power every single day, and so is everyone else. But the minute
You take it personally on yourself as this is my idea that got rejected. This is that person rejected me. Then you will play in the hurt frequency. That person rejected me, you will play in the anger frequency, helplessness frequency, reminding you again through these lines, which have to be read so slowly. These are your emotions that have created a circumstance outside today called rejection, which today is pinching you. It's pinching you because it is your frequency of hurt, anger, helplessness that has come to play today. Looking at the whole story from the energy and not from the outside story. That's what we always do, and coming to that in the play. हिंदी में जब हम ये देख पा रहे हैं कि हम रोजाना तो रिजेक्ट करते हैं और दूसरे लोग भी रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो चुभता नहीं है। क्यों नहीं चुभता है? क्योंकि उसको हमने अपना नाम नहीं दिया कि ये मैं हूं जिसका रिजेक्शन हो रहा है। खाने में आज चाइनीज और इंडियन का चॉइस हो रही है, एक चुन लिया, ना तो चाइनीज मेरा है और ना इंडियन मेरा है, तो मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन जो तो मैंने किसी भी चॉइस को अपना कि नहीं तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते, तुम हमेशा मेरे कहे को रिजेक्ट कर देते हो, तो तुम एक चाइनीज और इंडियन खाने की चॉइस को भी बुरा मान जाओगे। तुम बुरा मान जाओगे, लेकिन बुरा मान जाओगे, ठेस लगेगी तुम्हें, दुख होगा तुम्हें। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि आज तुम्हें उस ठेस में खेलना है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी ऊर्जा में जो ठेस भरी हुई है वो ऊपर उभर के आई है ताकि तुम उसको देख सको और उसमें खेल सको। तो उसको अगर देखना हो तो ये लाइनें पढ़ जाओगे, और अगर उसमें खेलना हो तो खेलते ही रहोगे, अंदर की तरफ कहाँ ही देख पाओगे। तो ये लाइनें बहुत धीमे धीमे अपने आप से पढ़िए कि ये पूरे पात्र में ये मेरे इमोशन हैं, ये भाव मेरे ही तो हैं, मैंने ही तो बनाए हैं। मैं जब जब कोई भी चीज का चुनाव करता हूं, करती हूं, तो मुझे इनमें से एक एक्सपीरियंस होता है, कुछ इमोशंस का एक्सपीरियंस होता है। जब दूसरे लोग कोई चुनाव करते हैं तो उनको भी उस तरीके से कोई इमोशन महसूस होता है। लेकिन जब मैं खुद पे ले जाऊं कि मुझे नहीं चुना गया, तो फिर अलग तरीके के इमोशन बनते हैं। और जब मैं खुद पे ले जाऊं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, तो अलग तरीके के इमोशन बनते हैं। ये चुनाव तो मुझे एकदम फ्री महसूस करवाता है, और साथ में कितने ही इमोशंस भी तो बनाता है। सो आई अलाउ द इमोशन। करना क्या है? बैठ के इमोशन को ही तो देखना है। सो आई अलाउ द इमोशन। क्यों? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी ही तो है, एक फ्रीक्वेंसी है। कितनी ही सारी फ्रीक्वेंसीज, और उनमें से भी तो हम कोई भी फ्रीक्वेंसी चुन सकते हैं। तो अभी इसी वक्त में चुनते हुए आई टेक एनर्जी फ्रॉम मीनल, आई एम मीनल। ये चुनाव है जो हम रोजाना ही कर जाते हैं अपने साथ। कितनी ही बार खुद को मीनल की एनर्जी में ले आते हैं, और बुरा भी नहीं लगता, कितना ही बढ़िया लगता है दूसरी फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट करते हुए। लेकिन कल को अगर दोबारा कोई भी दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाए तो कोई बात नहीं, सब बढ़िया। आई एम ओके टू एक्सपीरियंस दिस इमोशन अगेन। बढ़िया है, इमोशन ही तो है, कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Looking at the word rejection in this way, that it is here to give you experiences of yours being broken. Something breaks in you, that is the hurt that you experience. When your idea is broken, when your personality is rejected, then you experience that brokenness of the self. But please understand, at all times,
The only thing that will bring you back to the awareness that you are complete is a frequency shift. So reject that frequency of broken and simply move to another frequency, which will help you change and understand yourself as complete. You are complete. Now that you're able to understand your power of rejection and their power of rejection, are you able to thank the actors for bringing the experience of these emotions in you? Please go back to those instances and to the actors a thank you. If the actor is a person, hug the person in the energies. If it is an event where you felt the rejection, hug all the persons that you think are related to the event. Take a deep breath in and just be in this space of I take energy from Meenal. I am Meenal. I take energy from Meenal and I am Meenal. In this moment, I am this frequency. The frequency of Masti, the frequency of surrender, the frequency of joy, the frequency of love. And I understand that all of these experiences of the body are simply experiences that I have chosen. Every experience of mine, I have chosen. Every experience of mine has made me who I am today. And I'm so thankful for that. Being in gratitude to your own energies that help you choose. Remember, choosing is your power, and the other side of choosing is simply rejection. That's all there is to it. That when you have the power to choose, the polarity will show you that there is this other side also, which is that of rejection. So letting go of all that heaviness that you hold about rejection and being able to accept rejection as a normal way of life. Every single day, we go through rejections. Just because every single day, we make choices. So now, what are you ready to celebrate in the moment? I would say, are you ready to celebrate your rejections in this moment? Whatever you are ready to celebrate, just know that I feel awesome. I feel like a winner because I am awesome. No reasons needed. I am awesome. Om Mani, Om Mani, Om Mani. All right, everybody. Looking at the way of life, normally when we look at this word rejection, it holds such crazy, heavy energies. Yeah, it hurts us when we think of those moments that we got rejected. But hopefully, when you will sit down, and again, if something is still bubbling up or staying with you, simply go through this webinar. It's going to be out there. It's already out there on YouTube. Go through the webinar till you can actually experience the lightness of
Array, it's just the opposite side of choices. Because you can make a choice, you have to reject something. And then the other person also, because they can make choices, they have to reject something. So, not to be taking rejections personally, because we make choices every day, every moment. Okay, everybody, lots and lots of love. Bye, all. See you guys. Thank you so